Hello and welcome uh, to the first lecture of chapter number 5, integration. So let's start with approximating areas, which is 5.1 topic. So for 5.1, there are multiple three sub-learning objectives. So we will complete this 5.1.1 till 5.1.3 in this lecture. Let's start it with the first thing, that is sigma notation, that is summation notation. So how we can solve the summation. So what is summation and how we can start it? So let us say that, for example, if we want to add all the integers from 0 to 20 without sigma notation, so this is the method to write all the things or all the numbers and add plus sign. तो ये मेरे पास एक लेंथी मेथड है और एक बहुत टाइम टेकिंग मेथड है. सो इसको हम रिप्लेस करते हैं एक साइन से which is known as summation sign. This sign is known as summation sign. Summation sign basically is used for summing multiple numbers. Okay, let us say a number started from, I am summing the numbers from 1 to 20, that 1 plus 2 plus 3 till 20. So I have used summation. Then here below there must be initialization. Initialization. I have to write here that it is always there is initialization, and there is the and above there is the count or total count. Okay, so there are two basic things. So first thing is initialization and second is my count. Okay, so for initialization means from where to start. So let us say it is summation of I. So I start from the first number, that is 1. So I use I equals to 1 here with the count total numbers. I will count till 20. So this will sum I equals to 1 till I equals to 20. So it will start from 1, 2, 3 till 20. So this is the method to solve lengthy summation problems. Okay. So typically the general notation form is this one for summation, where AI basically determines or describes the terms to be added, and I is called index. Okay, so I is known as index, and AI basically determines the terms to be added, and again, n is the number of values or the count values, that how many numbers you want to sum or add. So this is about all about summation. So yes, let go to the examples. So using sigma notation, uh, A and B. So first is we have to write the sigma notation and evaluate this sum 3i with I equals to 1, 2, 3, 4, 5. So I have to write here summation. What is the AI? AI in this case is my 3 power I. Okay, with I equals to, I starts with 1 and ends at 5. So I will write here I equals to 1 till I equals to 5. So this will be like 3 power 1. First it is I equals to 1. So 3 power 1, 3 power 2, 3 power 3, 3 power 4, and 3 power 5. And this will sum it. So my answer will be 363. Okay, now next is write the sum in the sigma notation.
with 1 over 4 plus 1 over 9. So I have to write the sigma notation for this. So let us say that it will be 1 upon 1, 1 upon plus 1 upon 4 plus 1 upon 9 plus 1 upon 16 plus 1 upon 25. So what does this mean? This means that there is a series notation. Series notation means that there is a common series factor. What is this? Let us say this is 1, so it will be 1 square. Okay, this is 4, 4 mean 2 square. This is 9, 9 mean 3 square. Again, for 16, it is 4 square and 5 square. So my terms are added or multiply in square notation. So I will write this as, I have to, that my this form is 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus 1 upon 5 square. Okay, so this will be summation. Now my journal term will I will write as 1 upon, now 1, 2, 3, 4, 5. So it will be my I, okay, index, and the common multiple is square, that it is a function of square, so I square. So my function will be 1 upon I square with initial value I equals to 1, and it goes till I equals to 5. So it will go to the 5. So this is my answer. Okay. Now some rules, properties of sigma notation. So let us say that A1, A2 till AN and B1, B2 till BN are two sequences and C be the constant. So how to do? So for first, summation of C with I equals to 1 to N, so it will be NC. Okay, always it will be NC. For second one, if there's a C is basically constant, so I this will not be the part of my summation, so I will not use it in the summation, so this will be right here. So there will be summation of only of AI. Then if it is AI plus BI, so I will split in summation of AI plus summation of BI. If there is negative, so it will be summation of AI minus summation of BI. Let us say the summation of n with I equals to 1 with AI. This will be equals to summation of AI with I equals to 1 with m plus summation of n divided by I equals to m plus 1 with AI. अब इस फॉर्म में जो जो फिफ्थ है, दिस इज लिटिल ट्रिकी. इसमें ये कह रहा है कि अगर n का समेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओनली विद रिस्पेक्ट टू AI, तो मैं स्प्लिट कर दूंगा एक थर्ड नंबर विच इज m. वो m कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है. फिर उसको मैं दोबारा समेशन करूंगा n with initialization factor I equals to m plus 1. Okay, so let us say that it is summation of 10 number with I equals to 1, ठीक है, with AI. तो मैं क्या करूंगा इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिव के इसको दो में तोड़ दूंगा. So first it will be summation of m. Let us say I will divide in 4. m equals to 4 with I equals to 1 AI. अब मैंने I कब कहाँ तक था 1 से लेके 10 तक, अब मैंने स्प्लिट कर दिया टिल 4. सो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट समेशन I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट था, लेकिन नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी I इक्वल्स टू m प्लस 1. सो m मैंने क्या लिया था 4, सो इट विल स्टार्ट विद I इक्वल्स टू 5 टिल n मीन दैट इज 10. तो दिस इज द मीन दैट अगर मैंने अपने सिस्टम को स्प्लिट करना है, लेट्स से इस केस में क्या था 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने होल सिस्टम को एक एक जगह सॉल्व नहीं किया, मैंने फर्स्ट को 4 में स्प्लिट कर दिया, दिस वन, एंड देन फ्रॉम 5 टू this one, this is my second. So this is known as this property, which is summation property. Hope you understand each and every point. Okay. Okay, now rules for sum and power. So for sum it will be, let us say if I equals to this function, so it will be n into n plus 1 divided by 2. अब ये कैसे होगा? Let us say that ये जनरल टर्म है मेरे पास ऐसी जनरल टर्म, लेट से मैं फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ. सो फर्स्ट टर्म इज n equals to 1, 1 plus 1 divided by 2, so it will be 1 into 2 divided by 2, so my answer is 1. ये बता रहा है n equals to 1 कि मेरा पहला नंबर जब 1 डालूंगा तो 1 है, यस. फॉर सेकंड इट इज 2. तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है अगर मेरे पास सिंपल सम है, ठीक है. You have to memorize it. Okay, for square it will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. This is, अगर आप इसे एलेबोरेट करना चाहते हैं तो ये बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज के रिस्पेक्टिव आप फाइंड करना पड़ेंगे कि लंबी डेरिवेशन है, उसके बाद यू कैन अटेंड द आंसर. सो फॉर अगर मेरे पास स्क्वायर का है, that is consecutive square, so it will be n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and for q it will be n square into n plus 1 square divided by 4. तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत जरूरी है और you have to memorize it. Use the sum of the terms. Let us say it is I minus 3 का square, and I will start from 1 till 20 200 sorry. तो सबसे पहले क्या करना है, summation लिखना है. Summation with I equals to 1 till 200 with the general value, general function value I, this is I minus 3 का whole square. So this is a minus b whole square. So apply the formula here. अब मेरे पास ये क्या है, तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो मैंने अलग अलग जो है इस पे समेशन अप्लाई करनी है. ओके, लेट अस से यहाँ 6 है, सो 6 मस्ट बी 6 को मैं बाहर ले जाऊंगा समेशन से, सो 6 विल बी हियर and I square into 6 and then summation into then this one. अब स्टेप बाय स्टेप मैंने समेशन सॉल्व करना है. फॉर आई स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया था, स्क्वायर के लिए क्या था, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by how much, 6. अब n इस केस में कितना है, 200, so it will be 200 here. So 200 plus 1, then 2 into 200, that is 400 plus 1 divided by 6. तो ये I square का समेशन हो गया. Then I value, I mean simple value. So for simple it is n into n plus 1 divided by what? It will be divided by 2. So into 200 into 200 plus 1 divided by 2 plus, अब अगेन इसका समेशन क्या होगा, विद 9 का समेशन जब मैं लूंगा इट विल बी सिंपल I, ओके, और सिंपल n होगा, I होगा, इट विल बी सिंपल n एज आई डिस्क्राइब दैट. अगर मेरे पास n होगा, I इक्वल्स टू 1 हुआ और एक कांस्टेंट हुआ, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी c that is constant into the value of n. ओके, तो यहाँ तीन प्रॉपर्टीज लगी हैं. आई स्केयर के लिए, अगेन आई स्केयर के लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है जो मैंने पावर रूल का इस्तेमाल किया है. आई के लिए, ठीक है, आई के लिए ये वाली, एंड द कांस्टेंट वन के लिए मैंने सी एन का. आफ्टर दैट आई हैव टू एलेबोरेट एंड simple multiplication and I find the summation answer. Okay, for next one again it is
फर्स्ट आई हैव टू स्प्लिट इट, सबसे पहले मैंने स्प्लिट कर दिया क्यूब और उससे। सो क्यूब का बेसिकली क्या है, एन स्केयर इंटू एन प्लस वन का होल स्केयर डिवाइडेड बाई फोर, और स्केयर का उसी तरह एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स. For this case, n equals to 6, so 6 square, 6 plus 1 whole square divided by 4. This is for I cube. And for I square, it is n into n is 6 and 6 plus 1. Then 2 times that is 2n plus 6 plus 1 divided by whole divided by 6. So my answer is 350 in this case. Okay. Finding the sum of the function values. Let us say fx equals to x square. Over the interval test. तो उसको भी मैंने क्या करना है, समिंग वैल्यू करना है, तो x को i में रिप्लेस कर दिया. दिस विल बी i क्यूब विद 10 till our the interval 1 till this one. So initialization start with 0 always. Okay, so why it is 0, 0 से क्यों start होगी. Let us say x 0 power cube. So the power of 0 is always equals to 1. So it will be n. एन अब यहाँ क्यूब है मेरे पास, तो वही फॉर्मूला का एन स्केयर इंटू एन प्लस वन का होल स्केयर डिवाइड बाई फोर. So it will be 10 square into 10 plus 1 divided by 4 whole square. So this will be my answer, that is 3025. Okay, now approximating areas. Approximating areas basically, and this is the shaded region or the or the curve boundaries. Let us say this is my curve starting from this point to this point. So the area under the curve is my approximating area. So I have to find this area. Let us say this is my first point, so I will approximate that here x equals to a and x equals to b. These are my domains. Okay, or simply when talking, so these were my domains and range of my function values. So this is the method or finding approximating area. Let us move towards the shaded part. Okay, a set of point, let us say p equals to xi with I equals 0 till n, and x0 is less than x1 and till it divides interval ab. This means that we divide this partial area into small parts. Okay, small infinite parts till, so every part uh, will be such that the first part x naught, that the first part will be less than the corresponding part. Okay, so for this interval into subintervals, let us say x naught, x1, x1, x1 till, so this is known as the partitions of AB. And if the subintervals all have the same width, then this is known as regular partition of the interval. Okay, so इसका मतलब ये हुआ, हम क्या करते हैं हमेशा इसको सब डिवाइड करते हैं. लेट्स से इट इज x naught, x1, x2. ओके, स्मॉल सो छोटे टिल xn. So अगर इनके दरमियान डिस्टेंस सेम हुआ तो इट इज नोन एज रेगुलर पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB. और सेकंड रूल इज लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो लेफ्ट जो मेरे पास अप्रोक्सीमेशन है, let us say that and a subinterval xi plus minus 1 into xi. So for I equals to 1 till n. So construct a rectangle with a width delta x and a height equals to function xi minus 1, which is the function value at the left hand point, and the area of this interval will be. Okay, so again इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है कि लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कैसे लगता है. इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट. फंक्शन ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये है कि पहला फंक्शन एक्स नॉट होगा, सेकंड फंक्शन इज x1,
until, okay, and delta x is the change in the value. Okay, so delta x is the change in value. Let us say that it is x2 minus x1. Okay, so it will be summation of n I equals to 1. So function will be xi minus 1 till delta x. Okay, so this is the way to find left endpoint approximation. Now for right approximation, so it will be, again आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट के लिए क्या है. It will be xi minus 1. Okay, लेफ्ट के लिए, एंड राइट के लिए it will be fxi delta x. Okay, so again, for summation of n I equals to 1 with function value xi minus 1 delta x, this is why left end point approximation. Okay, and for right endpoint approximation, it will be summation of n I equals to 1 with fxi delta x. तो ये मेरे दो वैल्यूज और दो फंक्शन को आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करते हैं. फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, सो जिसमें आपको एक एक चीज का पता चल जाएगा. ओके, approximating the area under curve with right and approximation. So let us say that function value is x square and 0 to 2 is the interval, use n equals to 2. Okay, so first मुझे ये पता है कि मेरा इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज माय 0, और जा रहा है 2 तक. ओके, यूज n इक्वल्स टू 4. n इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है कि मेरा जो चेंज ऑफ x है, n इक्वल्स टू 4 का मतलब ये कि मेरा पूरा इंटरवल कहाँ से 0 से लेके 2 तक है, तो मेरे जो सब पार्ट्स बने, छोटे छोटे पार्ट्स कितने बने, 4 बने. सो इट विल बी लेट्स से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. ओके, तो ये कैसे बनते हैं, इसके लिए डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं. डेल्टा एक्स होता है, देखें, 0 एंड 2. डेल्टा एक्स मतलब कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज डेल्टा एक्स कितना है. डेल्टा एक्स विल बी, जो मेरी फाइनल नोटेशन है, दैट इज माय, ये मेरा a होता है हमेशा और ये b होता है. सो इट विल बी b माइनस a डिवाइडेड बाय n. सो इट विल बी b क्या है मेरा, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4. सो इट विल बी 0.5. सो पहला पॉइंट 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5. ये मेरे पास डेल्टा एक्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर बेसिकली quadratic function है. So function, quadratic function is basically a curve function. So this will be a curve function of my system. Okay, so I will again say that it is my curve function of my system. So we can use this. So again, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. So this is the width of each interval. So first क्या हो जाएगा, 0 से लेके 0.5, then 0.5 से लेके 1, then 1 से लेके 1.5 and 1.5 से लेके 1.2. Now use a left hand approximation. अब यहाँ हमने हमने सिर्फ राइट नहीं यूज करना, लेफ्ट भी यूज करना है, राइट भी यूज करना है. ओके, बोथ लिखा हुआ है. सो यूज लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन. सो लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब हुआ. ओके, सो लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर देखें, लेट अस से आई हैव टू, मेरे पास ये एक फंक्शन की एक इंटरवल की वैल्यू है सेकंड, थर्ड, फोर्थ. लेफ्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हुआ कि जो इंटरवल की वैल्यू मैंने सपोज की है उसमें से लेफ्ट वैल्यू लेनी है.
लेफ्ट एंड पॉइंट में सिर्फ लेफ्ट ये पॉइंट, इस पॉइंट में लेफ्ट ये है, इसमें लेफ्ट ये हुआ और इसमें लेफ्ट ये हुआ। ठीक है, सो इसमें मैंने लेफ्ट पॉइंट पे ले लिया f0 फंक्शन, ये क्या हो जाएगा फंक्शन एक्स नॉट। ठीक है, पहला फंक्शन है, सो इट विल बी फंक्शन एक्स नॉट। सेकंड इज फंक्शन x1 दैट इज 0.5, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज 1 एंड नेक्स्ट इज फंक्शन x3, फंक्शन x3 विल भी हो जाएगा मेरे पास 1.5। ठीक है, सो मैंने क्या फाइंड करना, पहले फंक्शन की वैल्यू, अब मेरे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है, सो मैं एक्स में जीरो पुट करूंगा, सो जीरो का स्क्वायर विल बी व्हाट, जीरो स्क्वायर विल बी जीरो। ओके, 0. नो सॉरी, एक्स की जगह 0.5 पुट करना, सो 0.5 स्क्वायर इज 0.5 स्क्वायर डालूंगा, सो माय आंसर इज 0.25। अगेन 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1.5 का हो गया 2.25। ठीक हो गया, फिर लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेशन एल एन बेसिकली होता है, इट विल बी एल एन, एन इक्वल्स टू 4, सो आप लिखना है L4, इट विल बी फंक्शन एक्स नॉट डेल्टा एक्स, पहली वैल्यू एफ x1 डेल्टा एक्स, f2 डेल्टा एंड एफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स। तो नाउ फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करनी है सिंपली, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1.75। ठीक हो गया, नाउ फॉर राइट, राइट के लिए क्या करेंगे हम, अगेन राइट के लिए जैसे मैंने बताया था, पहले लेफ्ट किया, अब राइट के लिए क्या हुआ, जो मेरे इंटरवल है उसकी राइट वैल्यू फर्स्ट 0.5 1 1.5 एंड 2, ये चार वैल्यूज इस्तेमाल करनी है और इसी तरह ही फंक्शन में डाल के मेरे पास लेट अस से एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड रिस्पेक्टिवली, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी विच इज माई। अब जो था मेरे पास लेफ्ट के केस में वो था कि फंक्शन एक्स आई माइनस वन, ओके, सो इस केस में सिर्फ फंक्शन एक्स आई होगा मेरे पास राइट में। अगेन मैं लिख देता हूँ, फॉर राइट के केस में इट इज, राइट को लिखते हैं आर के साथ, आर एन यानी कि एन इक्वल्स टू 4 इस केस में। ठीक है, यहाँ लिखते तो आर एन, तो इस केस में होगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 विद एन विद एफ एक्स आई, एक्स आई का मतलब हुआ कि इनिशियल वैल्यू 1 है, तो फंक्शन f1 2 3। लेफ्ट के केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था, इट विल बी एफ एक्स -1, सो जब मेरी वैल्यू 1 होगी तो वो 1 - 1 दैट विल बी 0, तो ये मेरे पास प्रीवियस एक वैल्यू चलेगी। ठीक हो गया, सो फॉर राइट इट विल बी f(x1) डेल्टा x, f(x2) डेल्टा 2 डेल्टा x, f(x3) डेल्टा x एंड f(x4) डेल्टा 4। और टिपिकली इसी तरह मैंने फंक्शन में वैल्यूज डाल के पुट करनी है और डेल्टा x मल्टीप्लाई करके r4 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, सो मेरी लेफ्ट एंड अप्रोक्सीमेशन कितनी है 1.75 और राइट 3.75। अच्छा जी, फॉर्मिंग रिमेन सम्स। अब रिमेन सम क्या होता है बेसिकली, अच्छा, we we can evaluate the function at any point. Let us say my point is xi and the subinterval will be xi minus 1, that is my previous value, and my current value, that is xi, and use f xi star as the height of our rectangle. Okay, so इस पे मैं find करता हूँ area, so this is my riemann sum। again riemann sum के लिए क्या क्या approximation करनी है, लेट अस से riemann sum के लिए मैंने जो इंटरवल लेना है xi-1 और xi। ठीक है, अगर मैंने xi के लिए फाइंड करनी है तो इट विल बी समेशन ऑफ n i इक्वल्स टू 1
with function x I, okay, with star. This star basically shows the height of the rectangle for the corresponding system, and delta x again is the change in the width of my function. So इस तरह basically हम Riemann sums to find the area of my system. Okay, so अब इसको हम सॉल्व करते हैं. यस, लेट अस से अगर हम इसमें लिमिट लगा दें तो एरिया अंडर द कर्व लेट अस से एक इनफाइनाइट है, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि मैंने जो सब इंटरवल्स किए हैं छोटे छोटे किए हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस पे लिमिट भी हम लगा सकते हैं. ठीक हो गया. फाइंडिंग लोअर एंड अपर सम्स. ठीक है, अब देखें मेरे पास इंटरवल उसी तरह गिवन है. इंटरवल कैसे गिवन है, दैट इज a and b with n इक्वल्स टू 2. तो डेल्टा एक्स मैंने उसी तरह फाइंड करना है. डेल्टा एक्स कैसे फाइंड किया था, अगेन ये फॉर्मूला आप लिख लें, दैट इज b माइनस a डिवाइडेड बाय n. So b is my 2, this always first value is a, second value is b, so 2 minus 1 divided by 4, so my delta x is 1 upon 4. Okay, so 1 upon 4 means मेरा इंटरवल अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, 1 upon 4 means 0.25. ओके, तो चार इंटरवल्स में पहली वैल्यू आ जाएगी 1.25, 1.5 एंड 1.75. उसी तरह मैंने चार इंटरवल्स बना दिए. ये पहला इंटरवल 1 इंटू 1.25, सेकेंड 1 इंटू 2 इंटू 1.5, थर्ड 1.5 to 1.75, and last one is 1.75 to 2. Okay, so because the function is decreasing over the interval, so हम अब कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको अब ग्राफ इसका दिखाता हूँ. दिस इज माय ग्राफ जो कि शो कर रहा है कि मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10 माइनस एक्स स्क्र. तो जितनी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि स्क्र है, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो रिमन सम क्या कहता है, अगेन रिमन सम्स मेरे पास समेशन की वैल्यू, दैट इज फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज फंक्शन वैल्यू इज 10 minus x square into the value of delta x, that is 0.4. okay, so इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए देखिएगा मेरे पास फर्स्ट इट इज 0.25 जो मेरे पास x है, ये बार आ गया, एंड देन इट इज 10 माइनस फर्स्ट वैल्यू इज 1.25 जो मैंने अप्रोक्सीमेट किया यहाँ पे 1.25, क्योंकि जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स है वो कितना है 0.25. सेकेंड यहाँ पे मेरे पास कितनी थी 1.5, सो इट विल बी प्लस हेयर. यहाँ आप ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिकॉज देयर इज प्लस, तो प्लस की वजह से कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए, लेकिन यू मस्ट यूज ब्रैकेट. ओके, हम कहाँ थे, यस, फर्स्ट इट इज 1.25, 1.5, देन 1.75 एंड एट लास्ट 2. तो ये मैंने वैल्यूज लेनी है. अगेन पहली वैल्यू नहीं लेनी, स्टार्ट विद 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2, और इसको सम कर देने सारों को. आफ्टर समिंग मेरे पास ये आंसर आ रहा है 7.25. द एरिया ऑफ 7.25 इज अ लोअर सम and an underestimate. Okay, so this is the value. Underestimate basically क्या होता है कि वो वैल्यूज बेसिकली क्या आती हैं, ये देखिए ये वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही इस, ये जो छोटा सा एरिया जो मेरे पास, तो ये बेसिकली जब मेरे पास पूरे कर्व का एरिया नहीं आता, इसे हम कहते हैं अंडर एस्टिमेट. लेट अस से मेरा कर्व कुछ ऐसा बनता है. ओके, जिसमें मैं इसकी भी वैल्यू अटेंड करता हूँ, उसे कहते हैं अवर एस्टिमेट. So these are two terms to be recognized. Okay, lower and upper term for this function, and n equals to this one. So again उसी तरह मैं intervals find करूँगा. अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है 6 है, so उसी तरह b माइनस डेल्टा x फाइंड करूँगा b माइनस a डिवाइड बाई n,
जो मेरे पास आ रहा है n/12। सो पहली वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पाई, सो पहली वैल्यू हो जाएगी पाई/12, फिर पाई/6, पाई/4 एंड टिल पाई/2। ओके, तो उसमें अब मैंने क्या करना है कि अपने रिमेन सम्स की वैल्यू डालनी है, दैट इज सिंपल साइन एक्स विद डेल्टा एक्स। सो delta x will be x12, so first value is 0, so sine 0 into pi 12, then sine next value is pi upon, अब ये मेरे पास हमेशा लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये 0 है, पाई अपॉन 12 नेक्स्ट वैल्यू डाल दी है मैंने, फिर पाई अपॉन 6 डाल दी, पाई अपॉन 4 डालनी है और पाई अपॉन 3। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट वन इज पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 12। तो ये चार वैल्यूज मैंने साइन फंक्शंस में डालनी है, 4 to 5 वैल्यूज, 6 वैल्यूज आई थी, यस। ओके, पाई अपॉन 12 ये कांस्टेंट बेसिकली क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ फाइंड की थी। सो आफ्टर दैट दिस इज माय एरिया which is 0.863. So hopefully you understand each and every point. So this question is very important. uh, you can find each and every point using remains basically, remain sum is important, so you can practice as many as possible to understand all these topics. So goodbye from this lecture, we'll join in the next lecture inshallah.